जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स पैक की जाती हैं, वो कोका कोला की होगी, तो वो भी डिजाइन में जाता है, ठीक है। वो आप ऐसे ही किसी की बॉटल कॉपी नहीं कर सकते हो। ईयर रिंग्स, वॉचेस, शूज, पैकेजिंग, चेयर्स, automobiles, toys, all these goes. So 2D patterns, lines, compositions, color, shapes, combination of 2D and 3D aspects, all this goes under design. All this goes under design. Hmm? So I hope I'm clear. Whenever you anybody has any question, you can just stop me and you can ask a question. Hmm? Sure, sir. Yeah. Or you can note it down whenever you feel like. Now we'll go to, before going to trade secret, I think this should be the last. I'll go to the GI. Before going to trade secret, I'll go to GI. This is intellectual property, patents, trademarks, design, GI, copyrights में जाएगा, music, literature, artistic work, broadcasting, dramatics, sound recording, computer program, all this goes under IPR. What's a GI? See, some regions are popular for a product. You know, if you go to Banarsi silk, you know, Pashmina shawls, Kashmiri carpets, Basmati rice, these are very popular GIs. Mysore silk, Mysore sandal, Nilgiri chai, Assam ki chai, Darjeeling, Hyderabad pearls, Chanderi silk, जयपुर सिल्क ज्वेलरी। मतलब क्या, ये रीजन उस चीज के लिए, अब वो खाने पीने की चीज हो, कोई इस्तेमाल की चीज हो, कोई हैंडलूम्स हो, तो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी वाइन्स, नागपुरी संतरा, कोल्हापुरी चप्पल, सोलापुरी चादर, नाउ दीज आर पॉपुलर. So products which are coming from a region and are high quality compared to others, so they fall under geographical, they get a GI tag, they get a geographical indicator tag. तो उनको भी ट्रेडमार्क के जैसा एक लोगो मिलता है. Now these are some Indian GI and some international GI. Champagne, cigar, Scotch whiskey, tequila, Swiss knife, Napa Valley wine, Irish cream. So these are coming from that region. If you go to Goa, you'll find Feni. So that region is popular for that. It can be a eatable product. It can be fruits. It can be wine. It can be some jewelry. Anything. Kashmiri shawls or carpets. It can be anything from eating to non-eating. But that region is popular for that. It gets a GI. Something like this. These are GIs. ये ऐसा लोगो, तो जैसे ट्रेडमार्क में लोगो है, वैसे यहाँ भी लोगो मिलता है कि भाई ये आसाम से आ रही है, तो इट विल कम एट द प्रीमियम प्राइस. फर्क ट्रेडमार्क में और जीआई में इतना है, ट्रेडमार्क हर कंपनी का अपना है. मैकडोनल्ड का ट्रेडमार्क मैकडोनल्ड ही यूज कर सकता है. जीआई में क्या है, अगर रेड लेबल है, टाटा है, ब्रुक बॉन्ड है, ये सारे अगर आसाम में ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये सारी कंपनियां वो जीआई यूज कर सकती है. आसाम का जो भी चाय के लिए मिला है या नीलगिरी, तो ये वो यूज कर सकते हैं. तो GI can be used by group of companies operating. It's not a single company, right? It is group of company operating in that geography. तो बताएगा कि ये चाय आसाम से आ रही है, ठीक है. तो अगर टाटा दार्जिलिंग में काम कर रही है, तो वो आसाम का GI यूज नहीं कर सकती. So it is purely geography based trademark and can be used by group of companies. Trademark can be used by a single company. ठीक है. So I hope I am very clear with what I am trying to say. So it's a sign, it's a logo. Some locations are popular for a product. It identifies a product, gives product special quality, reputation. It can be agricultural, foodstuff, wine, spirit drinks, handicrafts, industrial products. But this GI tag, this trademark cannot be used by somebody outside operating or working और मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड दैट ज्योग्राफी. तो वो अगर उस ज्योग्राफी के बाहर है, तो वो यूज नहीं कर सकता है. तो जीआई इन्फॉर्म्स consumers that a product comes from a certain geography. Trademark is to distinguish a business, goods or services. GI can be used by more than one manufacturers. Trademark ये सिर्फ एक कंपनी का ही ओनरशिप होता है.
ट्रेडमार्क गिव्स ओनर राइट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग इट। एक बार आईपी सैंक्शन हो गया तो वो आईपी ओनर के परमिशन के बिना वो आईपी कोई भी यूज नहीं कर सकता है, वरना लीगल केस हो जाएगी। आप टाटा का ट्रेडमार्क यूज करो तो यू विल बी सूड, इट इज इलीगल। यू कैनॉट सेल your products with somebody else trademark, it is illegal. Now we'll go to the trade secret. So I think I covered all the IPs, patents, trademarks, design, GI, copyrights. What's a trade secret? Many times आईपी की दिक्कत ये है कि आईपी की दो प्रॉब्लम है। आईपी का एक प्रॉब्लम नंबर 1 है कि आपको गवर्नमेंट को एप्लीकेशन जब आप करते हो तो सारी टेक्नोलॉजी, सारे डिटेल्स आपको गवर्नमेंट को सबमिट करने पड़ते हैं। मतलब you have to disclose, you have to give all the information to the government. What does the government do? Government means the IP office. What does the IP office do? IP office publishes all your patent information online. That means anybody can read, download, understand your technology, and when the patent expires, they can make it copy. They can copy and start selling. So many companies feel there's a risk because there's a life, because you are disclosing to everybody, so they feel there's a risk. So why should we file IP? So they keep it as a secret within the company. Nobody will tell to anybody outside company. No? No, these are some of the famous trade secrets: the Google search algorithm, McDonald's, Big Mac, special saucing. तो ये सारे ट्रेड सीक्रेट्स हैं। तो कई लोग कंफ्यूजन होता है कि सर ट्रेड सीक्रेट करना चाहिए या पेटेंट, क्योंकि पेटेंट करेंगे तो आपको पेटेंट में प्रोटेक्शन है, ट्रेड सीक्रेट में प्रोटेक्शन नहीं है। पेटेंट अगर आपको ग्रांट हो गया तो आप एफआईआर फाइल कर सकते हो, पुलिस केस फाइल कर सकते हो, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, क्योंकि यू हैव द ओनर। ट्रेड सीक्रेट में आपके पास राइट्स नहीं है, यू कैन नॉट फाइल एन एफआईआर। ठीक है, so the protection is weak. In case of trade secrets, the protection is very weak. In case of IP, if your patent is approved, copyright is, आपको मालूम है हर थ्री इडियट्स में भी वो चेतन भगत ने कुछ केस किया था, फिर उसके पहले भी तारे जमीन पे भी कुछ केस हुआ था। सो ऑल दीज आर आईपी इश्यूज। तो चेतन भगत बोला मेरी नॉवल में मेरे परमिशन के बिना, then they have to go out of court settlement, you have to pay the author if it is proved. अदरवाइज जिसने चोरी किया है उसको जेल भी हो सकती है, उसको फाइन भी भरनी पड़ेगी और उसको जेल तक हो सकती है। सो आईपी हैज वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन विच अ ट्रेड सीक्रेट डज नॉट हैव। So should I go for IP? Now these are the choices. पेटेंट की सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, मतलब आप गवर्नमेंट को डेटा देते हो और गवर्नमेंट वो सारा डेटा ऑनलाइन पब्लिश कर देती है। मैं थर्ड पार्टी डाउनलोड करके सारा पेटेंट रीड कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ। आपकी टेक्नोलॉजी तो पूरी दुनिया को ओपन हो गई, सिर्फ एक ही है, आप एज इट इज कॉपी करके सेल नहीं कर सकते हो। मैं रीड कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, लेकिन मैं दूसरे की जो पेटेंट है उसको कॉपी करके सेल नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। ट्रेड सीक्रेट कोई डेटा मिलेगा नहीं आपको, ना उस पर कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे, ना कोई पेटेंट फाइल होगा, आपको एक कागज भी कंपनी के बाहर ट्रेड सीक्रेट मिलेगा नहीं। उसमें भी क्या करते हैं, वहां पे जो भी रीजन में ट्रेड सीक्रेट है कंपनी के अंदर, तो वहाँ पे एक्सेस, रिमोट एक्सेस देते हैं 4-5 लोग, कोई फिंगरप्रिंट एक्सेस होता है, तो दे कीप इट वेरी सीक्रेट so that nobody knows it. So after 20 years the patent expires, anybody can copy. ट्रेड सीक्रेट की कोई लाइफ नहीं है, जब तक आप सीक्रेट रख पाते हो so that will remain with you. And जो इंफॉर्मेशन विच मूव्स विद द एम्प्लॉय हॉपिंग, मतलब अगर कोई मैनेजर है, कोई इंजीनियर है, वो अगर किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है तो दैट शुड बी पेटेंटेड।
रीजन ये है क्योंकि इंजीनियर मैनेजर्स दे कीप ऑन स्विचिंग द जॉब्स, they will take the technology with them. If it is not patented, you are at a risk of losing that technology to the competitor. You know, the employees at the lower steps of the hierarchy, जो bottom most में है, वो उनको पैकेज मिला तो वो छोड़ देते हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी ले जाएंगे और कॉम्पिटिटर के साथ सेम चीज डेवलप होगी अगर वो ट्रेड सीक्रेट होगा तो। लेकिन पेटेंट होगा तो वो नहीं कर सकते क्योंकि अगेन they will face the legal challenge. So these are the pros and cons of whether to go for a trade secret, whether to go for a patent. Any questions till this point? Any questions? किसी कोई क्वेश्चन है? Sir. Yes. Participants, if you are having question, you can ask, right? Sir, audio is clear ना sir? विजय सर, भटकर सर, ऑडियो क्लियर है ना? ऑडियो आणि पीपीटी एकदम क्लियर है, क्लियर है. ओके. Very nice. कोणाला काही प्रश्न आहेत का? ओके. So the agenda is overview. We'll go and deep dive into patents because I think so the audience is from engineering, no? Most of the audience, or they are outside engineering also? Sir, most of the from our college and engineering. Okay. Yeah. So we'll deep dive into patents. So these are IP, patents, trademarks, design, GI, copyrights. So all this falls under the IPR. Now we spoke about all this. ये जो GI है, आप कभी-कभी एप्पल लेते हैं तो एप्पल के ऊपर वॉशिंगटन लिखा हुआ एक स्टिकर होगा. बहुत सारे फ्रूट जो अजीब दिखाई देते हैं कि वो इंडिया के नहीं है, उस पर कोई ना कोई स्टिकर न्यूजीलैंड का होगा तो वो उस पर लिखा होता है. That is exactly the GI. These are some more popular GIs. Darjeeling tea, Orissa rasgulla, Nagpur oranges, Tirupati laddu, Mysore sandal, Erode turmeric. Now we'll go to patent protects you for 20 years. अगर 2017 में फाइल किया 2037 तक वो रहेगा. 2022 में अगर फाइल करते हो 2042 तक वो आपको प्रोटेक्ट करेगा. So it's an exclusive right given to the inventor by the government to exclude others from making, using, selling, importing the invention for a period of 20 years. ठीक है. लेकिन एक याद रखिए, अगर पेटेंट इंडिया में फाइल है तो वो इंडिया में ही प्रोटेक्ट होगा. आप इंडिया में फाइल करके इंडिया में ग्रांट होता है तो वो चाइना में प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी. आपको चाइना में अलग से फाइल करना पड़ेगा, आपको यूएस में अलग से फाइल करना पड़ेगा. तो ये जो है ये रीजनल राइट्स हैं क्योंकि हर कंट्री का अपना आईपी ऑफिस है. तो अगर आप अगर यूरोप में बेचते हो कोई प्रोडक्ट, आप चाइना में बेचते हो, कोरिया में बेचते हो या बांग्लादेश में बेचते हो, जहां आप बेचते हो, जहां आपका बिजनेस है, वहां पे आपको सेपरेटली आईपी फाइल करना पड़ेगा. क्योंकि आपको जहां पेटेंट आप फाइल करोगे वहां पे प्रोटेक्शन मिलेगी. ऐसा नहीं इंडिया में फाइल होगा तो पूरे दुनिया में प्रोटेक्शन मिलेगी, ऐसा नहीं. कोई वर्ल्ड पेटेंट ऐसी कोई चीज नहीं है. यू हैव टू सेपरेटली अप्लाई फॉर दोज कंट्रीज एंड गेट द आईपी अप्रूव्ड एंड देन यू कैन डू द बिजनेस विदाउट लूजिंग एनी टेक्नोलॉजी. So these are regional rights. And second thing is a patent granted in US. अब वही पेटेंट अगर इंडिया में आता है तो जरूरी नहीं है वो इंडिया में सैंक्शन होगा. हर कंट्री के अपने लॉज हैं. कोई कंट्री जल्दी पेटेंट दे देती है. they are not very stringent on patent search, but India especially is very strict in terms of the medicinal, the pharmaceutical patents, because they know अगर फार्मास्यूटिकल के यूएस में अगर ग्रांट हुआ है, अगर वो इंडिया में फटाफट ग्रांट करना चालू कर दे तो यहाँ पे दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी. तो it will be a big blow to our middle class and poor class, where the US starts coming here and selling medicines जो यहाँ पे 50 पैसे को मिलती है, वही वो एक टैबलेट वही यूएस का आएगा तो कम से कम 7 रुपया 8 रुपया 10 रुपया एक टैबलेट हो जाएगा.
10-20 times. तो then आई एम गिविंग एन एग्जांपल, अगर जो 10,000 को कुछ 15,000 को कुछ आता है मेडिसिन, वही वो 1.5 लाख को अगर बेचेंगे तो वी रियली कांट अफोर्ड. That's why India is very strict in terms of pharmaceutical patents. So there is no guarantee a patent granted in one region would get granted in other countries also. इसकी कोई गारंटी नहीं है, because every country has different laws. Every country even कोई चीज एक कंट्री में लीगल है तो वो वही चीज दूसरी कुछ चीज ऐसी है कि वो अरब यहाँ पे वो लीगल है, यहाँ पे अगर दारू पीना लीगल है तो सऊदी में दारू पीना इलीगल है. तो देयर आर लॉज, लॉज आल्सो डिफर फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री. तो कोई आईपी अगर किसी कंट्री में लीगल है और दूसरी कंट्री में इलीगल है वही चीज, तो वहां पे वो सैंक्शन ही नहीं होगी. मान लो कोई जीआई है और वो वाइन के रिलेटेड है, वो इंडिया में सैंक्शन हो जाएगा, लेकिन वो फिर सऊदी में अगर वाइन पीना अलाउड ही नहीं है तो वहां पे सैंक्शन ही नहीं होगा. लॉज, द इंटरेस्ट, सो जो IP granted in one country may get rejected in other country. That is the point that I want to make. Not necessarily US ने ग्रांट कर दिया तो हमारे इधर भी ग्रांट हो जाएगा. पेटेंट क्या हो सकता है? नॉवेल्टी होनी चाहिए. इंडिया में जैसे 1970 से IP लॉज पीरियडिकली रिव्यू भी होते हैं, क्योंकि बहुत से इन्फ्रिंजमेंट आते हैं, बहुत सी केसेस आती हैं, तब मालूम पड़ता है कि हमारा IP लॉ वीक है, तो टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करना पड़ता है. And with time, there are many border gray areas which have to be polished. Otherwise, these foreign companies, they take advantage of that and they get their IP granted, and then things are difficult for us. So techniques which are novel, products which are new, saves time, money, manpower, material, are smart, add new features to the products, not for destructive purpose. So this is what can be patented. हाँ, कोई एकदम नया न्यूक्लियर बॉम्ब बना दे कि भाई अभी इससे मैं एक न्यूक्लियर बॉम्ब से पूरी कंट्री उड़ा सकता हूँ, एकदम न्यू टेक्नोलॉजी है, इट कैन नॉट बी पेटेंटेड बिकॉज डिस्ट्रक्शन, कॉजिंग हार्म टू द लाइफ. चोरी करने के लिए कोई नया हथियार बना दिया, किसी को खून करने के लिए कोई हथियार बना दिया, ये सब पेटेंट नहीं हो सकता है. यूजफुल होना चाहिए, नॉट फॉर डिस्ट्रक्शन. इट शुड बी यूजफुल, इट शुड बी नॉवेल. नया होना चाहिए और यूजफुल होना चाहिए, तभी वो पेटेंट हो सकता है. इवन आइडियाज लाइक कोई बोले मैं टाइम मशीन बना दूंगा, आप फ्यूचर में जा सकते हो, पास्ट में जा सकते हो. आइडिया अच्छा है, लेकिन क्या उसको डेवलप करना पॉसिबल है? तो अगर मियर आइडियाज कैन नॉट बी पेटेंटेड, मियर आइडियाज विच उसका प्रोटोटाइप और डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो सकता है, दे कैन नॉट बी पेटेंटेड. सो वी शुड फोकस ऑन पेटेंट्स विच कैन बी कमर्शियलाइज. पेटेंट वही बोलेंगे जो पैसा जनरेट करे, नहीं तो फिर बायोटा में भाई मैंने 10 पेटेंट किए मैंने. So that is a challenge. That is a challenge where we file patent, we get it, grant भी हो जाता है, but then commercialization has to happen. That is the actual objective of getting the IP. It may be design, it may be copyright, it may be a patent. Any type of IP should be able to generate revenue. So mere ideas cannot be patented. Should be novel, should have inventive step, उसका एप्लीकेशन भी होना चाहिए और लीगल होना चाहिए. लीगल, हमने देखा इलीगल चीजें जो है वो पेटेंट नहीं हो सकती. सो लॉज ऑफ नेचर, फिजिकल फेनोमेना, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, अल्गोरिथम्स, समथिंग व्हिच इज नॉट यूजफुल, नॉट नॉवेल, so this cannot be patented or used for destructive purpose. This cannot be patented. नेचुरल चीजें, अगर न्यूटन ने ग्रेविटी अगर पेटेंट कर दी होती तो पीपल वुड हैव टू पे फॉर यूजिंग ग्रेविटी. इट इज नॉट पॉसिबल. कोई एरोप्लेन भी उड़ाएगा तो उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो उसको बिकॉज ही इज यूजिंग द ग्रेविटी प्रिंसिपल, ही विल हैव टू पे टू न्यूटन. सो नेचुरल फेनोमेना कैन नॉट बी पेटेंटेड. So something which comes out of his intellect, which is not obvious, which is novel, which has use, only that can be patented. तो यहाँ पे नॉवेल्टी दिया हुआ है,
कोई इंफॉर्मेशन किसी पब्लिकेशन में, किसी रिपोर्ट में, किसी थीसिस में, किसी पेटेंट में, कहीं पे भी उसकी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे नॉवेल्टी है। आप सारे ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोडक्ट कैटलॉग सर्च कर लो और आपका जो भी आईपी है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन कहीं भी अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, तभी वो नॉवेल कहलाएगा। यूजफुल, नॉवेल, नॉन ऑब्वियस एंड स्पेसिफिकेशन। इसको डिटेल कर सके कि भाई ड्राइंग्स हैं, क्लेम्स हैं, इन्वेंशन, तो वो सारा डिटेल उसका रिपोर्ट हमको सबमिट करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिकेशन, पेटेंट स्पेसिफिकेशन, जिसमें हम वो टेक्नोलॉजी को पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। तो दिस इज द पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया। Should be non-obvious, should be novel, should be useful, should be legal. Statutory मतलब should be legal in that country. Novelty. See, there was a patent granted for the haldi. That haldi has antibacterial medicinal properties. ये सिंपल पेटेंट यूएस में ग्रांट हो गया था, ठीक है। अब ये पेटेंट ग्रांट हुआ तो देन इंडिया टुक एन ऑब्जेक्शन कि व्हाट इज न्यू इन दिस, यू आर टेलिंग हल्दी हैज मेडिसिनल वैल्यू, एंटीबैक्टीरियल वैल्यू प्रॉपर्टीज हैं, व्हाट इज न्यू इन दिस, वी ऑलरेडी नो दिस फ्रॉम सेंचुरीज, व्हाट इज, वेयर इज द नॉवेल्टी। So that patent was granted in US, and we filed an objection, and India could prove that this is not novel. They showed their old literature, ancient literature, documents which inform that haldi can be used for medicinal purpose. So since they were able to defend that, so that patent got cancelled. That US patent got cancelled. So there are many such patents, which can be opposed, and India time to time we put because US easily grants patents, and that is a problem, because they want all the technology in the world. They should be the masters. China, number of patents you file by US, number of patents filed by China, it's huge. It's huge. So because of that, we have time to time raised objection against US patents. There are many such examples. They have, again, neem patent is there, pudina patent. So all these have medicinal values. But then we know this for centuries, and we have put across to the US patent office. We have won many cases. Patents on neem, amla, jar amla, anar, dudi, gulmendi. So US needs to revoke all such patents based on the Indian indigenous. So then India made a website, which is the traditional knowledge. And in that website, India placed all such information which is known for centuries. So whenever US patent wants to grant, and when they search online, they will find the resources on the Indian. I don't have the website address, but all such novel things, all such things which are already known in India, उन्होंने अपनी एक वेबसाइट पे इंडिया ने डाला है, गवर्नमेंट ने। कभी भी यूएस में पेटेंट फाइल भी होगा या दुनिया में कहीं भी वो पेटेंट फाइल होगा, जो हमारे आयुर्वेदा में पता है, वो ऑटोमेटिकली उधर मिल जाएगी इंफॉर्मेशन, उसकी नॉवेल्टी फेल हो जाएगी, एंड दे वुड नॉट बी एबल टू ग्रांट द पेटेंट। So this is the step that India has taken after such blunders by US. नहीं तो क्या होगा, हल्दी US इंडिया में आके हल्दी इट विल इतना महंगा, जो 10 times वो बेचेगा कि भाई ये तो हमारा आईपी है, तो आप इसको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हो in the Ayurvedic medicines. Then it will become their IP. So that is the problem there, where we need to keep a check, where countries like US are misusing their IP power, and then they are putting us on the blacklist. So most patents based on indigenous knowledge appropriation violate the criteria of novelty combined with non-obvious. So they don't go thoroughly through all the literature.
Basic problem is they don't go thoroughly through all the literature and they are in hurry to grant the patent because they want to be the IP power. And that is exactly the problem. So in India, you see patent easily grant नहीं होता है. They go through a thorough check. ऐसे ही आपको आसानी से पेटेंट नहीं मिल जाएगा. वो थरो चेक करेंगे, वो फिर आपको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आएगा, उसके बाद में ही वो आपको ग्रांट करेंगे. So this is about prior art, novelty. प्रायर आर्ट मतलब जिस दिन आप पेटेंट फाइल कर रहे हो उस दिन तक इसकी कोई रिपोर्ट लिखित रूप में या किसी भी रूप में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, तभी उसको नॉवेल्टी बोलेंगे. आप जो आईपी फाइल कर रहे हो उसकी कोई इंफॉर्मेशन किसी भी रूप में इन एनी फॉर्म should not be available. Then only we say that this idea is novel and it is patentable. Known to the public before it was invented, not described anywhere, not used or sold publicly. So I think we have a limitation of time, otherwise this is a 5-hour session. So this is prior art. So how to check prior art? You can, I'll show you now. See the left side, suppose the left side is the prior art. So right side is a machine. Is it obvious? No. जो भी expert है वो देख के बोलेगा कि नहीं, the right side machine is not obvious. Then is it better? It is driven by a motor. Yes. High performance. Yes. Maybe it can give 10 times more output as compared to the hand axe. So novel, yes. Non-obvious, yes. Useful, yes. Productivity increases, yes. So can it be patented? Yes, it can definitely be patented. So now these are old machines, abhi to available hai, but whenever such cutters were invented and left side में आपका hand cutter है और जब ये right side invent हुआ था तो ये patentability criteria fulfill करता था. अभी तो you know the rubber pencil they are attached together. लेकिन previously rubber and pencil are different. I am talking of 2.5 decades back. And then somebody thought, you know, बच्चों का रबर गुम हो जाता है, पेंसिल गुम हो जाती है. Why not integrate the two? So why I am putting this? Because patents are not always challenging. ऐसा नहीं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग आइडियाज ही पेटेंट होती हैं, यूजफुल जरूर होनी चाहिए. I know somebody informed me that स्टेपलर के पिन खत्म हो जाते हैं. So one girl in undergraduate course, what she did is जो लास्ट के पिन है उसको उसने येलो, ऑरेंज और रेड, सॉरी ऐसा कुछ जैसे कलर्स होते हैं ना, कि रेड आ गया मतलब अभी पिन खत्म होने वाली है, तो उसमें लास्ट के जो पिन हैं उसको कलर अलग दिया था. मोमेंट यू गेट येलो मीन्स यू आर अलर्ट कि नाउ इट इज टाइम टू चेंज द पिन्स इन द स्टेपलर. तो वेरी सिंपल इन्वेंशन, बट इरिटेशन होती है ना कि अब ये पिन खत्म हो गए, मैं ढूंढ रहा हूँ पिन को. तो बिफोर एंड आपको पता चल जाता है कि अभी 10-15 पिन बाकी है, अब आपको इसको नए पिन रिफिल करने हैं स्टेपलर के अंदर. वेरी सिंपल इन्वेंशन एंड द पेटेंट गॉट ग्रांटेड. दिस यू क्लिप, यू नो, पहले एक प्रॉब्लम थी कि पेपर को आपको फाड़ना है, फिर धागा पास करके उसको डैमेज कर देते. अगर बहुत सारे पेपर को एक साथ रखना है तो उसको उसमें से होल करके उसको बांधते थे, तो इट यूज्ड टू डैमेज द पेपर्स. विदाउट डैमेजिंग, how can we keep the bunch together? So somebody invented these paper clips. This is a US patent. This is something like 1990 or something. So, simple idea. So the point I want to make is ऐसा नहीं है कि पेटेंट बोले तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैलेंजिंग होना चाहिए. बहुत सिंपल आइडिया जो यूजफुल है, जो कमर्शलाइज हो सकते हैं, they can also be patented. So we have to do a prior art analysis जहाँ पे हम सारे existing literature को search करते हैं. We try to find product catalogs. We try to find patents. Now where to go? Where to search these patents? I'll tell you. Use the right keywords. Use the right keywords. Sometimes when you do to Google, if you अगर आपने गलत keyword किया होगा तो आपको ना 10,000 20,000 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे. लेकिन आपने अगर सही कीवर्ड यूज किया तो यू कैन फिल्टर डाउन योर सर्च, कि आपको 100 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, 100 डॉक्यूमेंट्स में ही आपको सर्च करना है. यहाँ पे
A device that pumps blood in the human body outside is called extra corporeal. अब ये कीवर्ड है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल, ये कीवर्ड सर्च करोगे तो आपको सब मिलेगा. अगर आप कुछ और लिखोगे तो आपको हजारों लाखों डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जिसको सर्च करना मुश्किल हो जाता है. जैसे चूहे को पकड़ने के लिए आप अगर रॉडेंट ट्रैप ऐसा कीवर्ड डालोगे, तो देखिए ऊपर दिया है कि भाई इतने सारे होते हैं. अगर आप राइट कीवर्ड डालेंगे तो आपको 700 हिट्स, सिर्फ 700 डॉक्यूमेंट्स ही मिलेंगे. So you can filter down your search if you use the right keywords. That's an important step in prior art analysis. मतलब प्रायर आर्ट बोलते हो आप, मेरी आइडिया नॉवेल है या नहीं है ये मैं सर्च करूंगा ऑनलाइन गूगल पे जाके, बट आई यूज द राइट कीवर्ड्स. अच्छा सर. Yes sir. Yes, I want to ask one question regarding this. Yes. Let us say students want to know whether the idea is patentable or not. Yes. And as you mentioned, they will survey. Yeah. So one survey is from Google, we can say. Yeah. Right. But Google is a very broad engine. Okay. Yes. So Yes. is there any other types or other So ways? you Yes, can you can search patents also. I'll show you. Maybe what I'll do is because students are supposed to yes. file the patents. Yes. And the question may be in their minds, so that's why I asked the question. So my screen is visible? Yes, sir. Yes. Sir, see Google patents. Yes. When you go to Google patents, Okay. and if I say, let's say, I want to find some patents related to electric vehicle BMS, let's say. So I get these results. So this patent is filed in US, China, and one more country. So this, I'll just click this. Here I am only seeing the patents. Yeah, that is actually I want to know. Yeah. So come to know, we have to search Google patents. Right? Correct. Yes. Not Google. This is Google patents. Sure. So when I select this, sir, you can say you'll get the abstract, you'll get the drawings. ये पेटेंट कब फाइल हुआ था, ये 16 मार्च 2017 कब ग्रांट हुआ, सारा इसका हिस्ट्री दिया हुआ है यहाँ पे. ये एक्टिव है, मतलब अभी भी ये एक्सपायर नहीं हुआ है. कब एक्सपायर होगा? एंटिसिपेटेड एक्सपायरेशन 2026 में. ठीक है. तो ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, ये क्लेम्स भी दिए हुए हैं. Sure. इन्होंने क्या, व्हाट दे हैव डन, obtaining camera image of one or more tires of vehicle with one or more cameras during operation. They have done, you can read the, हमने बताया था ना कि आईपी फाइल करने के बाद आप पूरा रीड कर सकते हो. कंप्लीट टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल. इनफैक्ट मैं सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि rather than going for literature review, you should also go for patent survey. Sure. So complete detail is there. You can even download the patent survey. Download the patent. Sure. You can download. Say now this is in Chinese because it's a China's patent. Yes. So this is in Chinese, but you can download the US copy. I'll also, sir, I'll show you Google India patent search. Now Google patent में आपको दुनिया के सारे पेटेंट मिलेंगे. इंडिया पेटेंट सर्च में सर you can search only the Indian patents. So you can search US patent search. You will get only US patents. Sure. Google patents, you will get all the patents. And okay. Let it open. Hello, sir. Yes. Sir, if patent is filed in US or China, and it is not filed in India, and we copy that patent to India, so it will be valid or not? Please, can you repeat the question, sir? Sir, if patent is filed in USA or Correct. China, correct, and if we are filing same patent in India, with Yeah. we are not, means the company which has filed in US is not filing, but different person has copied the patent and filing the patent in India, so it will be valid or not? Sir, it will get rejected. Sir, Yeah. but you told that it has to be patent in each region. It is region-wise.
Sir, for protection, patent protection, you have to file in countries, okay, because you will get protected in that country. But as far as patent filing is concerned, see, when I filed the patent in India, the India Patent Office has its own very strong search engine. तो पूरी दुनिया में वो सर्च लगाएगा कि ये पेटेंट और कहीं पे ऐसा अवेलेबल है क्या, तो पकड़ा जाएगा. What I was talking about was protection, not the grant. See, patent filing and grant is a separate process. Protection means legal protection. अगर कुछ हो गया तो अगर आपने इंडिया में फाइल ही नहीं किया, किसी ने कॉपी कर लिया, तो that protection still they can file IP, but you know that the strong legal laws are not defined, no? So you may be in trouble. But when you copy the patent and file as it is in India, कोई यूएस का पेटेंट डाउनलोड किया और आपने फाइल कर दिया, सर इंडियन पेटेंट ऑफिस पूरी दुनिया का लिटरेचर सर्च करता है, प्रायर आर्ट सर्च करता है, वहां पे अगर पकड़ा गया तो आपका पेटेंट वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा. Okay, sir. So protection is different and this filing is different. They are completely two different things. Okay, sir. So what I was trying to say is about the legal protection. If you want legal strong protection, you should get it approved in India. But even if you don't get, somebody else cannot patent that in that country. अगर आप नहीं भी फाइल करते हो तो कोई और आपकी जगह पे वो पेटेंट फाइल नहीं कर सकता. ठीक है? It means if product is patent in any country or any region, no one can copy in any different region. Same No, cannot. Sir, when you file the patent, that patent office, duty of that patent office is to check the novelty of that patent idea globally, not only in India. So that novelty has to be checked globally. पूरी दुनिया में ही वो कहीं पे ऐसा एज इट इज आइडिया अवेलेबल नहीं होना चाहिए, तभी वो पेटेंट होगा. तो नॉवेल्टी की बात कर रहे हैं तो नॉवेल्टी वी आर स्पीकिंग ग्लोबल टर्म्स. Clear? Jain, Supal? Yes, sir. Okay. So I hope I'm clear. This is one more WIPO. If I go to Google, WIPO is World Intellectual Property Organization. यहाँ पे भी आपको दुनिया के सारे पेटेंट मिल जाएंगे. तो गूगल पेटेंट से वाइपो पेटेंट सर्च है, यहाँ पे आप डालिए इलेक्ट्रिक डन. ये यहाँ पे देखिए सारे दुनिया के पेटेंट मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हो इसको डाउनलोड. तो ये एक स्टूडेंट में हैबिट लगाना है कि सिर्फ लिटरेचर सर्वे मत कीजिए, आप पेटेंट सर्वे भी कीजिए. उससे क्या होगा ना, लेटेस्ट क्या लोगों ने किया है, कि एलजी ने क्या किया है, टेस्ला ने क्या किया है, वो पढ़ पाएंगे. जब वो पढ़ पाएंगे तो नेचुरली उनका जो नॉलेज लेवल है वो करंट और अपडेटेड होगा. रिसर्च पब्लिकेशन 10 साल पुराने पढ़ने में कोई इट डजंट मेक सेंस. दिस इज 26 मार्च 2013. क्लिक इट. इन्वेंटर कौन है, एप्लीकेंट कौन है, सारा आपको डिटेल्स, टाइटल क्या है. You can download this description, claims, very systematically given. You can read the claims. Claims मतलब what is your contribution? आप क्या क्लेम कर रहे हो कि मैंने इसमें ये नॉवेल्टी लाई है. You get the drawings. Patent family मतलब related patents. This is WIPO. This WIPO is the organization formed by 160 countries coming together. So where it's a single platform. आपको अगर दुनिया में 100 पेटेंट फाइल करने हैं, आप WIPO के थ्रू डायरेक्टली कर सकते हो. You can apply one application and you can apply for 160 countries through WIPO. So WIPO is an interface where you can apply for many countries' patents simultaneously. You will get the fees
policies, all information. And WIPO also conducts training courses. There is World Intellectual Property Organization. There was a treaty, Patent Cooperation Treaty. Through that treaty between these 160 countries, WIPO has come into existence. So you can go to, this is WIPO IP, you'll get all the information. You can search design, GI, plant variety, digital evidence. You need all the details on the WIPO. This is search. I'll go to simply. So this WIPO is again, you'll get the global database. Google Patents global database. Indian patents search, only Indian patents. US Patent Office, only US patents. I'll go to my presentation. So, sir, clear how to search the? Yes, sir. Okay. Any student can ask any question, because yes, please. Sir has just cleared the doubts, because otherwise we will not be in a position to answer the questions, we can say. Okay. Yes. So yes. try to ask the questions, and it's a very new topic, and we can apply patents, and sir is having great knowledge in this. Yes, sir. You can proceed. Yeah. So using the right keywords like this virtual fit. अभी आजकल आप ऑनलाइन ही वो कपड़ा आपको फिट होगा नहीं होगा, चश्मा आपको फिट होगा नहीं होगा, वो सब आप देख सकते हो कि ये साइज आपको आती है नहीं आती है. बहुत से आजकल ऐप्स हैं जहाँ पे आप कपड़े चूज करते हो और साइज भी आपको बताता है कि साइज आपको आएगा नहीं आएगा. देयर इज वर्चुअल फिट. So you have to use the keyword virtual fit. So using proper keywords during the search will help you find the right patents. If you use the loose or wrong keywords, आपको 1 लाख डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जिसमें सर्च करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है. सो राइट कीवर्ड से आपको राइट लिटरेचर मिलेगा फॉर प्रायर आर्ट सर्च. प्रायर आर्ट मतलब आज की डेट में पेटेंट फाइल कर रहा हूँ, सो ऑल द लिटरेचर रिलेटेड टू माय आइडिया टिल टुडे. यू कैन डू प्रोडक्ट सर्चिंग, प्रोडक्ट कैटलॉग्स, कि अगर कोई कंपनी बेच रही है क्या, अगर सिमिलर प्रोडक्ट्स कोई बेच रहा है तो देन you cannot really go with that. So this is about patent searching. We can go on talking. I'll share these slides with Bhatkar sir, so he can circulate with all the audience. So how long it take to search? It may take months. Till you find, जब तक आपको आपके पेटेंट के रिलेटेड कुछ नहीं मिल जाता, you keep on searching. If you are not able to find anything, you are lucky, your idea is patentable. If you are able to find something very similar, you are unlucky, you should not file the patent. You will waste the money. Keep record of everything. So that, yes sir. Just regarding the money also, meanwhile you can mention the procedure and money involved in this patents as well. Yes. Okay, I'll skip this. This is discussed. This is Google Patents is discussed. These are other websites. You can file the patent online. Let's go to the online filing quickly. Patent protection for 20 years. Is IP granted in India applicable in all countries? No. These are regional rights. How are patent rights enforced? अगर कोई कॉपी करता है तो आप FIR फाइल कर सकते हो. What happens if I don't patent my invention? Others can copy and file. आपसे आइडिया चुरा के दूसरे लोग फाइल कर सकते हैं. आप किसी कंपनी से डिस्कस करते हो, पेटेंट फाइल नहीं किया है, तो they can copy your idea. So that becomes a problem. पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट क्या है? कोई आपकी आइडिया बिना आपके परमिशन के कॉपी करता है, दैट इज इन्फ्रिंजमेंट. देखिए ये देखिए, ये एप्पल में और सैमसंग में सिमिलर फोन्स है, आईफोन, तो इनमें वॉर चल रहा था, तो सैमसंग हैड टू पे $1 बिलियन क्योंकि उसने डिजाइन चुराया, एप्पल का डिजाइन चुराया. ये चेयर देखिए, ये यूएस पेटेंट है, किसी ने एज इट इज कॉपी किया, तो ये इन्फ्रिंजमेंट है. तो इसके लिए लीगल है, इलीगल है, और इसके लिए पनिशमेंट है, फाइन है.
फाइनेंशियल आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। अभी लेफ्ट राइट में देखिए, लेफ्ट में ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं, राइट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। कोलगेट का कूलगेट है, प्यूमा का फ्यूमा है, सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स हैं। लुक एट द नेम, बिस्लेरी का ब्रिस्ली, सब कुछ सेम दिख रहा है। सो दिस इज फूलिंग पीपल एंड सेलिंग, फूल करके सेल कर रहे हो, दिस इज इलीगल एंड इट इज पनिशेबल एंड द पर्सन डूइंग दैट कैन बी जेल्ड। So many patent wars are going on. You just search patent wars. There's a patent war between Paytm and PayPal. अब इसमें क्या है, दोनों ही अलग हैं, लेकिन जो ब्लू इंक ली है ना पेटीएम ने, इस पे से पेपाल ने पेटीएम पे केस किया कि ये ब्लू इंक हमको, कि भाई somehow we are connected. Paytm tried to give the feeling that somehow they are connected to PayPal, which is the original online transfer company. There's a legal war for this blue ink, blue color, which is given to Paytm. Like that, this is related to trademark infringement. There can be patent infringement, there can be copyright infringement, there can be GI infringement, there can be a design infringement. Can I obtain the patent, still keep the technology confidential? No, you have to give to the government. Can I extend my patent life beyond 20 years? No. तो अगर आपके पास फैक्ट्री नहीं है और किसी पेटेंट को आप कमर्शलाइज करना चाहते हो, तो मान लो आपके पास में ऑटोमोबाइल का इन्वेंशन है, तो आप टाटा मोटर्स के पास जाइए, महिंद्रा के पास जाइए, डिस्कस कीजिए, एंड यू गिव देम लाइसेंस, so they can sell, make, manufacture, sell on your behalf, and they will give you the license fee. So if you cannot commercialize, you can take the help of big corporates, startups, who will pay you money, licensing fee, or you can sell the technology once. एक बार सेल कर दो, भाई मुझे 50 लाख दे दो और आपकी टेक्नोलॉजी हुई, या हर साल मुझे 5 लाख दो license fee, and then you can manufacture this. So you can have one time agreement, you can have license, you can have royalty. Royalty means जितने पीस बिकेंगे उस हर पीस के पीछे मुझे इतने पैसे चाहिए. So royalty, licensing, one time sell on, this is how you can earn from your IP. This is how you can earn from your IP. WIPO we have discussed, I will not go into that. These are all countries who have signed WIPO. Now let me go to the fee. Yeah, this is the fees. So पेटेंट अगर कोई नेचुरल पर्सन फाइल करता है तो इट इज 8,000 रुपीज. 8,000 रुपीज. कोई स्टार्ट uh, 45,000. Up to 30 pages, it is 160. Up to 30 pages, there is no extra charge. But after 30 pages of the patent, 160 per page. For every extra claim above 10, it is 320 per claim. These are the charges. So charges are nominal, but if you go to agent, they will charge anywhere between 30,000 to 70,000. Fees can vary. A beginner patent agent will ask you 30,000, and a reputed company may ask you 70,000 or 1 lakh per patent. But then they will take care. सारा फाइलिंग, ड्राफ्टिंग सारा वही करेंगे. आपको सिर्फ उनको साइन करना है, इंफॉर्मेशन देनी है. They will take care of the whole process because they are charging money. But the patent filing fees is 8,000 for individuals. Achha, This is sir, copy. Yes, sir. regarding the same thing, fees actually, during the one of the IIC presentation, they mentioned they will help us for giving the fee for the students or faculty from Yes. the IIC institutions. Kapila. Yeah. So can we get some we can say help or funding? Sir, you can register on the Kapila website. Okay. And you can upload the patents, and that process you have to follow. So they will pay, I think 50% they pay, something like that. Yes. Okay. Yeah. Yes. Yeah. So this is trademark fees is 9,000.
These are IP offices in India, where you can file the patent. तो ये जो है ये टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है. तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ ये सारे बॉम्बे ऑफिस में फाइल करेंगे. आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, पौडीचेरी ये चेन्नई में करेंगे. हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ये दिल्ली ऑफिस में. तो किस रीजन के किस स्टेट में कहाँ अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो. तो हम लोग महाराष्ट्र में, तो हम लोग बॉम्बे पेटेंट ऑफिस में. ये 4 मेजर पेटेंट ऑफिस है इंडिया में. Quickly, I think, sir, how much time or should we stop, or थोड़ा टाइम है अपने पास? विजय सर? 10 minutes. Okay. What I'll do is I'll try to. This is the patent process. You file the application. Application gets published online. You request for examination, and there will be an exam of your patent where experts will comment. You have to reply to those comments, and finally your patent is granted. So filing, step 1, publishing, and examination. And if you satisfactorily answer all the questions, then your patent gets granted. अगर आप satisfactory answer नहीं है तो your patent gets rejected. और कोई फी रिम्बर्स नहीं होता है. कई लोग पूछते हैं सर पेटेंट रिजेक्ट हो गया तो 8,000 रुपए वापस मिलेंगे क्या? नहीं. इसमें अपोजिशन के लिए भी स्कोप है. किसी को अगर अपोज करना है आपके पेटेंट को तो एक सिंपल फॉर्म होता है, वो भर के आप उनको अपोजिशन भेज सकते हैं कि वी अपोज दिस पेटेंट फॉर सो एंड सो पर्पस. सो दीज आर स्टेप: नॉवेल्टी, ड्राफ्टिंग, फाइलिंग, पब्लिकेशन, एग्जामिनेशन, ग्रांट. Similar for trademark application, then anybody's objection, they will object. If there no objection, finally the trademark gets registered. Objection is third party को अगर कुछ बोलना है कि ये trademark गलत है या हमारा already है, तो they can file an objection. For any IP there's a third party objection. क्योंकि कोई अगर चुरा के कर रहा है तो थर्ड पार्टी को मौका तो देना चाहिए ना कि भाई ये IP नहीं हो सकता. एंड इसीलिए ये पेटेंट सारा ऑनलाइन पब्लिश किया जाता है ताकि लोग पढ़ें और किसी को ऑब्जेक्शन हो तो ऑब्जेक्शन ले सकें. दैट इज द रीजन व्हाई आईपी इज पब्लिश्ड ऑनलाइन फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, so that if anybody has any opposition, they can raise the opposition. So even if the patent is granted, it can be challenged कि ये गलत हुआ है, we are the owner of this technology, इनको पेटेंट ग्रांट नहीं होना चाहिए. Third party opposition can be raised even after grant, and they can claim financial damages. The patent granted can also get cancelled. These are forms. These are very simple forms जिसमें name, title of the patent वगैरह वगैरह. तो ये ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हो. They are empty forms हैं. So form 1 is for grant of patent, form 2 is the actual patent, form 3 is undertaking, form 26 अगर आप किसी एजेंट की हेल्प ले रहे हो तो, नहीं तो 5 नंबर का पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है. form 5 declaration of inventorship, again very simple, like that. So these are simple forms. Application for grant of patent, then form 2 is the patent, statement, undertaking, declaration. All these are available, and you can, जब आप पेटेंट सर्च करते हो ना तो ये फॉर्म भी आप डाउनलोड कर सकते हो. तो आप किसने कैसे भरा है, जो इंडियन पेटेंट वेबसाइट पे जाके सर्च करोगे ना तो पूरे पेटेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ डाउनलोड होता है. तो किसने कैसे भरा है ना वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो. तो यू विल गेट अ रेडी रेफरेंस, पेटेंट लिखा कैसे जाता है, फॉर्म्स कैसे भरे जाते हैं, यू गेट अ रेडी रेफरेंस. टॉप ऑन दिस, पेटेंट्स में क्या होता है, टाइटल, फील्ड ऑफ इन्वेंशन, IoT है, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग है, जो भी फील्ड ऑफ इन्वेंशन है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब प्रायर आर्ट की आज से पहले कहाँ किसने किसने कैसे पेटेंट फाइल किया, इसके रिलेटेड. जैसे हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, नॉवेल्टी फाइंड करते हैं, वैसे यहाँ पे भी प्रायर आर्ट मतलब लिटरेचर रिव्यू ऑफ पेटेंट्स, फिर नॉवेल्टी लिखना, फिर ऑब्जेक्टिव, भाई आपकी मेथड, आपका पेटेंट दूसरों से बेहतर कैसे है,
वो क्या एडवांटेज ला रहा है। देन द डिटेल ड्राइंग्स डिस्क्रिप्शन, एग्जैक्टली लाइक अ रिपोर्ट, 20-25 पेज का रिपोर्ट जिसमें आप सारी ड्राइंग्स, डिस्क्रिप्शन, आपका पेटेंट एग्जिस्टिंग पेटेंट से बेहतर कैसे है, व्हाट नॉवेल्टी इट ब्रिंग्स इन, व्हाट एडवांटेजेस इट इज ब्रिंगिंग इन, एंड फाइनली क्लेम्स, एक अप टू 10 क्लेम्स कि भाई आपने इसमें क्या अपना दिमाग से ऐड किया है, what exactly you are claiming कि this is my addition to the technology, that is claims. Claims are very important, they are heart of the patent. तो claims ही होते हैं जिसके बेसिस पे आपका पेटेंट ग्रांट हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। पेटेंट अच्छा लिखा है लेकिन क्लेम्स अगर आपने वीक और पुअर लिखे हैं तो आपका पेटेंट रिजेक्ट हो सकता है। सो सिर्फ पेटेंट लिखना जरूरी नहीं है, claims should be equally very strong, otherwise your patent will never get granted. I'll not go into all this, and let's see, if you want to file patent online, you need a digital signature. Buy a class 3 digital signature, you configure on your laptop, you keep all the PDF documents ready, and you digital signature is for around 3,500, you can use for 2 years, you can file hundreds of patents. So benefit is आप घर बैठे बैठे पेटेंट फाइल कर सकते हो, बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है आपको। फिर आप इस पेटेंट वेबसाइट पे जाइए, अपना लॉगिन क्रिएट कीजिए, वो डिजिटल सिग्नेचर प्लग इन कीजिए, आप लॉगिन कीजिए। नॉट गोइंग टू ऑल दिस। हाँ, लेफ्ट साइड में न्यू एप्लीकेशन है, लेफ्ट साइड में जो मेन्यू दिया है वहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐड मोबाइल, ऐड ईमेल, ऐड एप्लीकेशन नंबर, ऑल फॉर्म, न्यू एप्लीकेशन। जब आप न्यू एप्लीकेशन क्लिक करेंगे तो बोलेगा गो टू एनबीए वेबसाइट, प्रोसीड टू ई फाइलिंग। अगर आपका बायोलॉजिकल इन्वेंशन है, आप किसी जीव का उसमें यूज कर रहे हैं, तो आपको एनबीए वेबसाइट पे जाके उसका इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी, नहीं तो प्रोसीड। बायोलॉजिकल नहीं है तो प्रोसीड। तो यहाँ पे कन्वेंशन कंट्री, डिविजनल पेटेंट बोले तो एक पेटेंट को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, कन्वेंशन बोले तो इंटरनेशनल से यहाँ पे आए हैं। हाँ? तो नॉर्मली फॉर अस इट इज ऑर्डिनरी एप्लीकेशन, put the number of pages, put number of claims, put number of pages for claims, abstract, very simple. कितने पेजेस का आपका पेटेंट है, चाहे पुट हियर 12 पेजेस, 4 claims, तो जो भी है। फिर यहाँ पे आपका पेटेंट का टाइटल क्या है, एड्रेस फॉर सर्विस क्या है, कोरस्पॉन्डिंग ऑथर कौन है, उसका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एब्स्ट्रैक्ट आपके पास रेडी है, कॉपी पेस्ट करना है। पूरा पेटेंट का डिस्क्रिप्शन आपके पास रेडी है, कॉपी पेस्ट करना है। क्लेम्स आपके पास रेडी होते हैं, वो भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। तो सारा भर दिया आपने। फिर यहाँ पे जो इन्वेंटर्स हैं उनके नाम, नेशनैलिटी, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल, ईमेल, कंट्री, वो सब डालना है। फिर आप ऐड करो, उसमें ऐड करते जाओ इन्वेंटर्स, सारे इन्वेंटर्स ऐड कर दिए। अब इन्वेंटर एप्लीकेंट सेम है तो आप सिलेक्ट करो इन्वेंटर सेम एज एप्लीकेंट, उधर एक चेक बॉक्स है, एग्जैक्टली बीच में एक चेक बॉक्स है, इन्वेंटर सेम एज एप्लीकेंट। एप्लीकेंट नॉर्मली क्या होता है, अगर महिंद्रा है तो महिंद्रा इज द एप्लीकेंट एंड द इंजीनियर्स आर द इन्वेंटर्स। कमर्शियल राइट सारे एप्लीकेंट के पास होते हैं, बट कॉलेज में स्टूडेंट स्टाफ ही होते हैं तो दोनों इन्वेंटर एप्लीकेंट सेम होते हैं। कॉर्पोरेट्स में एप्लीकेंट ये कॉर्पोरेट होता है और इन्वेंटर ये जो स्टाफ है वो होते हैं। तो क्योंकि जो भी प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट होगा वो एप्लीकेंट मतलब कंपनी को जाएगा, इन्वेंटर को नहीं मिलता है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। यहाँ पे चेक बॉक्सेस हैं कि ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है, यहाँ पे बायोलॉजिकल मटेरियल यूज हुआ है नहीं हुआ है, आई एम द लीगल असाइनी, जो भी ये चेक बॉक्स सारा सिलेक्ट कीजिए। फिर सारे फॉर्म्स रेडी रखिए, फॉर्म 1 फॉर्म 2 जो भी है रेडी रखिए। तो यहाँ पे बॉक्स आता है, फॉर्म 1 सिलेक्ट कीजिए, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट नीचे आपके लैपटॉप में फॉर्म 1 होगा, सारा पीडीएफ में स्कैन करके साइन करके रेडी हो गए सारे डॉक्यूमेंट्स, अपलोड कीजिए। फिर ड्राइंग्स अपलोड कीजिए, फॉर्म 9 अपलोड कीजिए, फॉर्म 18 अपलोड कीजिए, जो जो अप्लीकेबल है वो सारे अपलोड, ऐसे दिखाई देगा सारे पीडीएफ आपने अपलोड कर दिए। फिर वो फीस बताएगा, ये 4,000, 6,500, ये 8,100 रुपया फीस है। फिर बोलेगा साइन डॉक्यूमेंट,
तो आपके जो डिजिटल सिग्नेचर है, जब साइन डॉक्यूमेंट बोलेंगे तो विंडो आएगा, तो आपके जो डिजिटल सिग्नेचर पेन ड्राइव है उसमें से आपको फाइल सिलेक्ट करके वो डॉक्यूमेंट को साइन करना है। दैट इज योर डिजिटल सिग्नेचर, दैट इज योर ऑनलाइन आइडेंटिटी। साइन करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट साइन हो जाएंगे, एंड यू आर रेडी टू पे द फीस, सबमिट। प्रोसीड टू पेमेंट में यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि वो सारी प्रोसेस एक्सप्लोरर में बोलता है करो, और फाइनल पेमेंट बोलता है गूगल क्रोम में करो। तो एक्सप्लोरर से लॉग आउट करके गो टू गूगल क्रोम, अगेन लॉग इन विद योर आईडी पासवर्ड ऑफ द इंडियन पेटेंट वेबसाइट। फिर वहाँ पे लेफ्ट साइड में फॉर्म सेव होता है, सेव फॉर्म को ओपन कीजिए, प्रोसीड टू पेमेंट, ऐसा आता है। Due to certain restriction in Bharat Kosh payment gateway, users are advised to use Google Chrome web browser while making the payments on payment gateway. तो पेटेंट सारा फाइल कर रहा था, अब ये क्यों है क्या है, आई डोंट नो, दिस वाज ओल्ड, लेटेस्ट अपडेट किया तो पता नहीं। All the patent filing was done on Explorer and the payment was to be done on Google Chrome. So make the payment, and once the payment is done, this is the receipt generated, and your IP is filed online from your desk. Your IP, you get this receipt on your email, you get this receipt in the your login ID, पेटेंट का जो वेबसाइट का लॉगिन है वहाँ पे मिल जाएगा। सो योर पेटेंट इज सक्सेसफुली फाइल्ड, यू हैव मेड द पेमेंट। और इंडियन पेटेंट वेबसाइट में जाके जो एप्लीकेशन नंबर मिल रहा है वहाँ पे सर्च कीजिए, टाइम टू टाइम आपको पता चलेगा कि आपका पब्लिश हुआ है, एग्जाम में है, तो उसकी जो करंट स्टेटस है IP इंडिया सर्विस पेटेंट जो सर्च है वहाँ पे आपके पेटेंट का नंबर डालिए, तो आपको पता चलेगा कि अभी आपके पेटेंट का स्टेटस क्या है, वो सबमिट हुआ है, वो पब्लिश हुआ है, वो एग्जाम हुआ है, वो ग्रांट है या रिजेक्टेड है, जो भी है। ये यूनिक जो एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पे लेफ्ट में दिया हुआ देखिए, देखिए यहाँ पे रिसीव डॉक्यूमेंट्स परपर्टिंग टू एप्लीकेशन फॉर पेटेंट नंबर 20, जो सेकेंड पैरा है 202121011680, ये जो नंबर है ये आप सर्च कीजिए तो आपको पेटेंट का पूरा आपको स्टेटस मिल जाएगा। सो यू कैन कीप ऑन चेकिंग कि आपका पेटेंट अभी कहाँ पहुंचा है। These are some more websites. So this is from my side. Dear participants, any question is there, you please ask to sir. Sorry sir, I had to rush because of the time. Yes, because 11 o'clock is almost 1 minute is remaining. Oh, I think dot 11, huh? It's a good time. But final slides I had to rush because of the time constraint. Any question is there, or should I go to? Sir, one thing I understand, affiliation is very important while filling the application, right? Yeah. Because whether you are filling on individual or through the organization, yeah, that will be the main issue, maybe. Yeah. Later on. Yeah. Or if any question is not there, then I will give the vote of thank you, sir. Look, Any sir, question is there? One question. Yeah. Go ahead. Proceed further. Sir, if patent is already filed on any product, but we are making something change in that product, and it is useful to people, so it will be considered as new patent, or it will consider as. So there are patent types. One is division patent. Then the second type is patent of addition. So in the existing, if you are adding something new, you can go for patent of addition. So where you have to give the back patent file number as a reference. So it is just an extension of the existing patent. That is called as patent of addition. Okay, sir. Yeah. So, and sir, if yes, the is mention in research paper, and we are making a product of that research paper according to research paper, so it will be valid. See, if you want to file a patent, you should not publish, because when you publish, then the novelty is lost. Sure. Okay. Sure, sir. Thank you, Bhojwani sir, for giving Thank you, sir. broad idea about patents, copyright. You have given the online survey for Google Patent, India Patent Search, WIPO Patent Search, online fees, online patent application, and most of the problems are solved. So I expect
the students try to explore your ideas and try to feel whether it will be granted or not, whether published or not. You don't worry about that, because patent, if you got idea, then you try to publish it, and you can take advice or information from Bhojwani sir or even other professionals also. But you try to file the application. That is very important. Right, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Yes. Sir. So, as your meeting is there, sir, at 11 o'clock, so we will stop now. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, friends. Thank you, all participants. And just be present for the 11:30, just 5 minutes before the. Sir, can you take a snap, I think, for our records? Yeah, you can take, sir. I will also take. So can all of you please switch on the cameras for 2 minutes? Just please switch on your camera. Yeah. I have also taken the geotag photos, sir. Yes, sir. These are required. These Yeah. are required for our IIC, AICTE. This lecture is this is sponsored by IIC. That is very important. Yes, sir. Okay, you can take, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much. And just be Thank you. present for the 11:30 lecture, which is on the startup, and that is a live experience you will get. Thank you. Thank you all. Just
Yes, sir. Same for service factor. हा. And this is the आता फक्त एक काम करा, पीपीटीचं शेअर करून बघा. जस्ट आय विल मेक यू को होस्ट. जस्ट वेट. आता बघा सर, स्क्रीन शेअर करून. 16, 35, 41.
Yes, sir. Yes, sir. Just we will wait for 5 to 10 minutes, 5 to 6 minutes, so that earlier lecture just end by 11:05 or maybe 10 also. So that our students or MMCOE members will join, and others also. So we'll just wait for 5 minutes. 5 minutes. नंतर मध्येच येईल.